गुड डे टू ऑल। मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है। कन्वर्सली मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ बॉम्बे में 48 ईयर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, आज थोड़ा वैकेशन रिटायर में हूँ, पर फैक्ट्स जो देने वाला हूँ, जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट प्रदीप शुक्ला में, इट्स ए यूनिक जजमेंट फॉर पासपोर्ट। बहुत सारे लोगों का अनुभव होता है कि पासपोर्ट रिन्यू करना है, ये करना है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी हो सकती है। ये टिपिकल केस ऐसा था कि जिसका पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए जो ये मैटर गई है, इट वेंट अप टू सुप्रीम कोर्ट। ऐसा हुआ कि उनके सामने बहुत सारे लिटिगेशंस थे। ही वॉज अरेस्टेड एंड FIR वॉज रजिस्टर्ड, केसेस वर पेंडिंग एंड उसका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था। तो ही हैड मेड एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट और ultimately High Court has allowed on certain terms and conditions that he should not leave India and he should not apply for visa and the permission to, because उनका पासपोर्ट जब तक किया था तो परमिशन खाली दिया था to hand over the passport for a particular purpose only. So he was very optimistic. So अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तो ही थॉट के नाउ मेरा काम हो जाएगा। ही वॉज ऑन बेल, उसके सामने केसेस वर पेंडिंग, मल्टीपल केसेस वर देयर। व्हेन ही अप्रोच द पासपोर्ट अथॉरिटी, दे वर रिलुक्टेंट। ऑफिशियली देयर वाज नो कम्युनिकेशन, बट अनऑफिशियली इट वॉज लर्न कि दे आर नॉट मच कीन टू रिन्यू द पासपोर्ट एंड बहुत टाइम लगा होगा। सो ही फाइल एप्लीकेशन बिफोर द हाई कोर्ट एंड अल्टीमेटली द हाई कोर्ट डिड नॉट ग्रांट परमिशन दैट वे बिकॉज दे हेल्ड कि इट इज़ अ पासपोर्ट अथॉरिटीज डिसीजन ऑन दैट टर्म्स। एंड अभी तो क्या है कि ऑलरेडी द डेट इज़ एक्सपायर्ड एंड पासपोर्ट अथॉरिटी ने ऐसा कुछ लिख के नहीं दिया है कि आपका रिजेक्ट किया है। So it was, the petition was rejected. Against that he went to Supreme Court. Now in the Supreme Court, the matter was argued, heard. There are so many things. The Supreme Court ultimately said that it cannot be denied. उसने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर पास किया है कि he should be hand over the passport for the purpose of renewal. Other conditions that he should not leave India and he should not apply for visa etc. should continue. But just because there are multiple litigations, criminal offense जो था, cases were recorded, FIR were registered, that does not mean that he should not be allowed to renew the passport. So ultimately Supreme Court ordered specifically to hand over the original passport to him and with a condition that they should renew it in usual terms and conditions for 10 years, except that the trial court orders of not applying for the visa or not leaving India, that restriction is a separate restriction, but that should not be a ground for the passport authority not to renew. Now this is a well considered very big judgment and it covers so many other points also connecting to passport, the rights of the passport authorities etc. But so far as this case was concerned, these are the facts. So I am not going in much detail about the other conditions and all, the rules and regulations of the passport officers and all, but this is something which for so many people it applies that any authority. Now this is a case of the passport authority, but otherwise also कोई भी ऐसी कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो या हो, they cannot stop any person using their regular right to do something which is otherwise allowed. So just consider it. किसी को कुछ भी हो, definitely they can refer it to me personally and likewise so many judgments I have uploaded. Only those judgments who are really helpful to the people at large, only those judgments मैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवोकेट प्रदीप शुक्ला में
अपलोड करता हूँ. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू.